Yes, good morning students. Today we discuss the next topic and the topic is Newton's law of motion. In last lecture you already know that we have discussed the basic concept of the law of motions. As you know that we have discussed the definition of the force, what is the basic concept of the force. After that we have discussed the things that the Galileo experiments for the first and second observations which is given by the Galileo, and using the concept of the Galileo we have to explain the concept of the inertia of motion, inertia of rest, inertia of directions. We have discussed the inertia concept. After that we have discussed the momentum. These things we have discussed in last lecture, or this is the second lecture of law of motion. In last lecture we have discussed the first lecture of the law of motion. This is the second lecture of law of motions, and today we have discussed the Newton's law of motions. You already know that the Newton's give the three law. This is the name of the scientist who developed the law of motions and give the law of motions. Therefore this is known as the Newton's law of motions. Newton's first law, second law and third law. This is the basic concept for the law of motions. और उसके बाद ये आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मोशन. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. बट इससे पहले जो स्टूडेंट्स ने सम स्टूडेंट्स हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, और जिस स्टूडेंट्स ने नहीं किया वो कर लो, बिकॉज व्हेन आई अपलोड द वीडियो देन द यूट्यूब गिव द सम नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड टू यू. तब आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा आज कौन सी वीडियो अपलोड हुई है. देन यू कैन वॉच दिस वीडियो और यू कैन क्लियरिफाई द योर कॉन्सेप्ट्स. एंड दिस इज द नाउ वी हैव डिस्कस्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. वी हैव डिस्कस्ड द बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द न्यूटन्स कंसीडर द थ्री लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. Three law have the three concepts. The first law is that Newton first law is that if any object is rest, uniform motion or rest unless an external force is applied on the object. जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट की सेम पोजीशन रहेगी. जैसे आप फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस ट्रे इज placed on my hand, but this is the at rest. When an external force is applied, this tree changes position. Otherwise, it's this tree on rest. Then this is the Newton first law of motion. There are the many examples of the first law of motion, and first law of motion contain the three stage for the rest, for the motion, and for the direction. This is the three situations for the Newton first law of motion, and you can give the any example for the Newton first law of motion. Now this is the definition of the Newton first law. You already know that the Newton's describe the Newton first, Newton second and Newton third. This is the three law. The first law is that if any object is rest, uniform motion or continuously rest, then if an external force is applied on the body, then this body changes position. Unless an external force is applied on the body, this is the statement of the Newton's first law of motion. You can consider the an example. For example, a book is laying on the table. This book is at rest. When we apply external force, this object changes position. But unless an external force is applied, this object does not change position. Then you can say this object is at rest. Then this is the statement of the Newton first law of motion. अब आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फॉर द कंसिडरेशन हमें सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को. तो फॉर दैट आई गिव द सम एक्सप्लेनेशन टू यू. इफ वी कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट आपके पास मास ज़्यादा है, एक कम है, और यू कैन कंसिडर लाइक दैट आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास ज़्यादा है, एक कम है, और दूसरी लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो एक हैवी एक लाइट है. और जब दोनों ऑब्जेक्ट को आपने दोनों स्टोन्स को या दोनों ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था, व्हाट विल बी हैपन, द मास इज डिफरेंट. मास एक का ज़्यादा एक का कम है, बट मोमेंटम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम. दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है.
तो उस सिचुएशंस में इफ वी अप्लाई द force on the object but the momentum is same, then mass is different, then we require the Newton's second law of motion for the change in the mass. तो मास के चेंज होने की वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ी. Then we can say this so that the same force at the same time cause the same change in momentum for the body of the different mass. This is effect that the Newton recognized the Newton's second law of motion. Now we have discussed, this is very important. Now we have discussed the Newton's second law of motion. This is the Newton's second law of motion. The definition is that the applied force directly proportional to the dp upon dt. अब क्वेश्चन आएगा dp upon dt क्या होता है? This is the force F applied force है directly proportional to rate of change of momentum. So d is the just for the differential form, small change in the momentum. Then you can also say rate of change of momentum. इसको हम p को, आपको पता मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं. Then this is the also definition of the Newton's second law of motion. Definition is that the for applied force is directly proportional to the rate of change of momentum. This is the definition of the Newton's second law of motion. Now we can also describe the momentum and the force. This is according to the Newton's second law of motion. F equal to ma. Force is the multiplication of the mass and the acceleration. This is also the Newton's second law of motion. But for that we are derive this formula. How we can get the value of F equal to ma. अब हमने ये ड्राइव करना है F equal to ma. How we can find it from the Newton's second law of motion? For that, how we can find this term? For that we can derive this formula. For that, firstly we can write the momentum. The momentum, if we consider a body of mass m and moving with a velocity v, then momentum equal to p equal to m into v. ये होता है, तो p equal to m into v हो गया. Then differentiating both terms with respect to t, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे लाइन differentiating this equations both sides with respect to t, then we get the value of dp upon dt equal to d by dt m into v. आपके पास ये आ जाएगा. आप इन्हें यहाँ पर लिखना है. इस इक्वेशन को मैंने 1 डाल दिया. इक्वेशन 1 को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. देन वी गेट dp upon dt d by dt into m into v. Here m is the constant, then we can write the value of the dp upon dt. और आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी m dd upon dt. और then we can write the same term m into a, because dv change in velocity upon time is equal to the acceleration. तो हमारे पास आ गया dp upon dt equal to m into a, where a is the acceleration which is produced by the object. Then we can write the definition of the Newton's second law of motion. Then you can write here, we got the term dp upon dt. ये हमारे पास आ गया term. After that you can write here using, इसके बाद हम लिखेंगे using the definition of Newton's second law of motion. Then we can write here, what is the definition of the Newton's second law of motion? F directly proportional to the dp upon dp. ये हमारे पास definition होती है, F directly proportional to dp upon dt. और अभी आपके पास dp upon dt की वैल्यू आएगी. Then we can write here F directly proportional to dp upon dt की जगह कितना आ जाएगा ma. और you can also write here F equal to k ma. अगर m की वैल्यू 1 है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, if m equal to 1, a equal to 1, f equal to 1, then value of k is also equal to 1. Then we can write here f equal to ma, क्योंकि आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई. Then from that definition you can also derive the formula of the force.
और यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स F इक्वल टू ma। ये हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं F इक्वल टू ma। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो डिफाइन द वैल्यू ऑफ द फोर्स। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास। फोर्स इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल होएगी? फोर्स की इक्वल होएगी। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन आल्सो डिफाइन द यूनिट। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स। यू कैन इजीली डिफाइन द यूनिट ऑफ द फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स आपके पास कितना होता है? न्यूटन होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स? न्यूटन। तो मैं इस टर्म को मैं समझता हूँ F इक्वल टू ma। ये एक फार्मूला है F इक्वल टू ma। पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में 1 न्यूटन क्या होता है? डिफाइन द टर्म ऑफ 1 न्यूटन। तब आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ एनी ऑब्जेक्ट हैव द मास 1 kilogram produce an acceleration 1 meter per second square, then the force is said to be a 1 Newton. अगर ये सेम हो जाए, define the term of dyne. Dyne is the CGS unit of the force. Then we can write here 1 gram 1 centimeter per second square. If any object have mass 1 gram produce an acceleration 1 centimeter per second square, ये सेंटीमीटर है, then the force is said to be a 1 dyne. तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपके पास आ सकता है। एंड आल्सो द वन थिंग इज दैट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा सकता है हाउ मैनी न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम इक्वल होता है। इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द थिंग्स इन लाइव क्लासेस, बट अगेन वी हैव डिस्कस द थिंग्स। यहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं। ये आपको पता है 1 यहाँ पर लिख रहा हूँ हाउ वी कैन से 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम। तो आपके पास होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे है? F इक्वल टू ma से आया। F इज द यूनिट ऑफ 1 न्यूटन 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम कितने ग्राम थे? 10 की पावर 10,000 ग्राम। और इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसका लिखता हूँ 10 की पावर 3 ग्राम 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप इसका ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 की पावर 5 डाइन 1 न्यूटन की ये वैल्यू। आपने यहाँ तक हमने यूनिट्स को डिफाइन कर लिए और यहाँ तक आपने करना है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द थिंग्स। उसके बाद हम अगले डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। मैं बता देता हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टुडे वी डिस्कस द न्यूटन फर्स्ट लॉ एग्जांपल्स एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस एंड द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ दिस वन। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन तो यहाँ तक आपने कर लेना है। अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी एंड आई आल्सो अपलोड दिस वीडियो इन यूट्यूब। यू कैन आल्सो वॉच एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस channel and also give the good comment on the video. Then thank you all of you.